Good morning, guys. So let's start today's class with illustration number 7 in incomplete records. As you can see, Shruti maintains her books of accounts from the incomplete records. 2 years are mentioned here, 16 and 17. Assets and liabilities are mentioned here. So we have to maintain two balance sheets here, statement of affairs here. She withdrew rupee 1000 per week for personal expense. She sold her investment 160 at 2% premium and introduced this amount into the business. You are required to find out the profit and loss. So firstly, I'm preparing the statement of affairs as on 2016. We have cash, BR, debt. So these are the terms related to the 2016 balance sheet: cash, status, stock, furniture, and the creditors. The balancing figure is known as the opening capital. Same, we had to write down the things in the closing balance sheet: cash, BR, debtor, stock, investment, and furniture. And this side we have creditor. This is the closing capital as per the just balancing figure. So you need to put the formula in it. The closing capital is 5,64,000. The value of opening capital is 339. Now we have to find out the value of drawings and additional capital as per the statement. She withdrew rupee 1000 per week. You know there are total 52 weeks in a year. So 1 week drawing is 1000. So for 52 weeks it is 52,000. She sold her investment 160 at 2% premium. सो हम इसको रफली कैलकुलेट करके देखेंगे. 160 को उसने 2% के एक्स्ट्रा प्रीमियम पर सेल किया, मीन्स उसने 3200 एक्स्ट्रा अर्न करके उसको सेल किया. सो शी विल गेट द मनी एज 1,63,200. दिस इज़ द additional capital. So from this you will be able to find out the value of your profit. It is 113800. This is illustration number 7. Look at one more question, illustration number 10. They all are simple question, I think. Vikas is keeping his accounts according to the single entry system. His capital as on 31st December 15 was 250 and his capital as on December 16 was 425. So here no need to prepare the statement of affairs because the capitals are mentioned already here. So we have to prepare statement of profit and loss only for 2016. As you can see, the value of closing capital is 425 and opening is 250. So I'm going to write down the formula: closing capital plus drawings minus additional capital and minus the opening capital. The closing capital is 425, the opening is 250. So these are the two things first. Next is, he further informs you that during the year he gave a loan of rupee 30,000 to his brother from business on his private account. उसने अपने ब्रदर को, यहाँ पर ये हमारी ड्राइंग्स की कैलकुलेशंस हैं, ये हम रफ में कैलकुलेट करेंगे the total number of या total amount of drawings. She said she take rupee 30,000 loan to her brother. उसके पर्सनल अकाउंट से उसने पैसा निकाल कर ब्रदर को दिया, मीन्स उसने अपने ब्रदर को दिया है बिजनेस में से निकाल कर, फ्रॉम बिजनेस में से निकाला. सो दिस इज ड्राइंग, क्योंकि ब्रदर को देना उसका पर्सनल एक्सपेंस है. एंड शी विड्रॉ रupee 1000 पर मंथ फॉर हर पर्सनल यूजेस. सो दिस इज ऑल्सो वन मोर थिंग. एक महीने का 1000 है तो साल का हो गया 12,000. ही यूज्ड अ फ्लैट फॉर हिज पर्सनल यूज. द रेंट ऑफ दिस फ्लैट इज़ 1800 पर मंथ. उसने फ्लैट को यूज़ किया है, 1800 पर मंथ फ्लैट का रेंट है. सो पूरे साल का हो जाएगा 1800 इंटू 12, 21,600. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एट एवरेज 10% ऑफ द रेंट. इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी होगा इसका 10% ऑफ द रेंट. इट इज़ 2160, रेंट का 10%. ड्यूरिंग द ईयर he sold his 7% government bonds of 50,000 at 1% premium and brought this amount into business. तो ये तो आपकी एडिशनल कैपिटल है. तो यहाँ से ड्राइंग्स निकलेगी आपकी 65,760. सो ड्राइंग्स इज 65,760. एडिशनल कैपिटल है, उसने 50,000 के बॉन्ड्स को 1% के प्रीमियम पर सेल किया. सो इट इज़ 50,000 प्लस 500. द एडिशनल कैपिटल इज 50,500. So you will get the value of profits from this. It is 1,90,260. This is the amount of profit made during the year. Yeah, the next topic is about the adjustments. Adjustments हमने financial statements में की, सेम वही हैं, आपको अच्छे से पता है. adjustments
जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं तो वो हमारे एक्सपेंस में ऐड होते हैं, लाइबिलिटीज़ में शो होते हैं, प्रीपेड हैं तो वो लेस होते हैं, लाइबिलिटी एसेट्स में शो होते हैं. एंड इफ़ वी हैव डेप्रिसिएशन बैड डेट्स दे आर द लॉसेस, तो दे विल बी रिड्यूस फ्रॉम योर प्रॉफिट्स. तो जो एडजस्टमेंट हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में की थी सेम उसी तरीके की एडजस्टमेंट हमारी इसी में यूज़ होंगी. सो लुक एट वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एडजस्टमेंट. लुक एट illustration number 12. Pawan Kumar keeps incomplete record the statement of affairs of 2016. Opening statement of affairs उसने बना के दी है हमें, means the opening capital is 70. His position as on 31st March 2016 was. So हमें statement of affairs 2017 maintain करनी है. This is the closing statement of affairs. As we have cash, bank, BR, debtors, stock, furniture, machinery and the creditors. So you will write. So the assets are cash, bank, BR, debtors, stock, furniture, machinery and the creditors. So these are the value of assets and liabilities as per the mentioned statement. So you will get the value of closing capital as the balancing figure. It is 108 by doing balancing मैंने statement find out की. Next is he withdrew during the year 30,000 rupees, out of which he spent rupee 18,000 for purchasing a scooter for the business. उसने 30,000 बिजनेस में से विड्रॉ किए जिसमें से उसने 18,000 का तो स्कूटर ही परचेज कर लिया जो कि बिजनेस के लिए था. इट मीन्स उसने पर्सनल यूज़ के लिए सिर्फ 12,000 रुपीज़ यूज़ किए. You have to find out the amount of net profit after all these adjustments. We have some adjustments. Depreciate furniture scooter by 20%. 5% of the debtors are bad and 800 are bad absolutely. Make a provision of 5% on the BR also. That's all about these things. So I'm going to prepare the statement of affairs. Statement of profit and loss, because we have to find out the amount of net profit after doing the adjustments. जो हमने पहली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई जहाँ से हमने दिस इज़ नॉट द फॉर्म, जहाँ से हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट फाइंड आउट की, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट की, वो बिफोर एडजस्टमेंट थी. अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे 2017 का प्रॉफिट गेट करने के लिए. सो फॉर दिस वी हैव फर्स्टली राइट डाउन योर फॉर्मूला, लीव दिस वन, प्रिपेयर हेयर. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 2017. As you know, we need the formula. First, closing capital plus drawings minus additional and minus opening capital. As from the statement of affair, the closing capital is 108. 108. She withdraw total 30,000. Out of that 18,000 is used for business scooter. तो drawings कितनी बची उसकी? 12,000 की. The additional capital is not mentioned in the question, and as per the opening balance sheet जो आपको mention है उसमें आपकी opening capital है 70,000. तो यहाँ पर हमारा profit आया है before the adjustment, it is 50,000 rupees. Now you have to do all the adjustments. जैसे यूजुअली आप प्रॉफिट्स में से एडजस्टमेंट्स को करते थे लेस या ऐड, उसी तरह से आपको लेस या ऐड करना है. अब आप क्या करते थे, दिस इज सपोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देयर आर टू साइड्स इन इट, डेबिट और क्रेडिट. हम यहाँ पर लिखते थे जीपी ब्रॉट डाउन इफ़ वी हैव डेप्रिसिएशन. सपोज दिस जीपी इज 10,000 एंड वी चार्ज डेप्रिसिएशन एज 1,000. दिस इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट सपोज. सो हम क्या करते थे, फिर हमारा नेट प्रॉफिट निकलता था कैरी डाउन 10 minus 1 9,000. सो मीन्स जो डेप्रिसिएशन थी वो आपने क्या की थी, प्रॉफिट्स में से माइनस की थी. तो सेम यहाँ पर भी हमें वही करना है, जो एक्सपेंसेस या लॉसेज हैं वो प्रॉफिट्स में से माइनस होंगे और जो इनकम्स हैं वो ऐड हो जाएंगी. तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड स्कूटर. सो दिस विल रिड्यूस योर प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट that amount of depreciation on which asset. We have two balance sheets here, 16 की और 17 की. तो हमें यहाँ पर 17 का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. तो 17 की बैलेंस शीट की एसेट्स या लाइबिलिटीज़ के ऊपर ही एडजस्टमेंट्स होंगी, क्योंकि हमें करेक्ट नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. सो द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट इज ₹8,000. सो यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दिस. 8,000 20%, it is 1,600
माइनस सेकेंड डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर 30,000 की टोटल अमाउंट में से हमने 18,000 का परचेज किया था स्कूटर, तो स्कूटर है 18,000 का जिसके ऊपर 20% की डेप्रिसिएशन लगेगी 3,600 एंड यू नो दिस एडजस्टमेंट दीज एडजस्टमेंट आर पोस्टेड ट्वाइस इन योर अकाउंट्स। तो एक तो हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, सेकेंडली हम इनको कहाँ लिखेंगे, या यू आर राइट, हम इसको अपनी एसेट्स में से लेस करेंगे। सो मैं आपको साथ साथ इसमें हमारी एडजस्टमेंट के बाद 2017 की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अगेन फाइंड आउट होगी, बिकॉज वी हैव टू शो द नेट एसेट्स और लायबिलिटी आफ्टर डूइंग द एडजस्टमेंट्स। सो वी हैव फर्स्टली द वैल्यू ऑफ फर्नीचर एज 8,000, मैंने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई 1,600, सो द रेस्ट वैल्यू इज नाउ 6,400. Then we have the value of scooter as 18,000 and we charge depreciation on this 3,600. So the remaining value is 14,400. So these are the two things. Next you have to make adjustment on the debtors. Find out the amount of debtors. They are 21,000. So debtors are 21,000. The adjustment is provisions and bad debts. So firstly you will reduce bad debts 800. On the rest amount you have to make provision, less provision 5% of this, इसका 1010, this is the amount of provision. यहाँ डेटर्स में से लेस किए तो ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट्स में से भी लेस होंगे, क्योंकि इसको P&L के डेबिट में शो करते थे, तो नेट प्रॉफिट्स में से तो ये लेस ही होते थे. प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स दे आर 800 एंड 1010. देखिए आप बुक में से भी चेक कर सकते हैं इसको, 800 एंड 1010 दोनों चीज़ें इसने डेटर्स में से लेस की, डेटर्स में से लेस की और प्रोविजंस प्रॉफिट्स में से भी लेस किए. द रेस्ट अमाउंट ऑफ डेटर्स आर 19,190. नेक्स्ट वी हैव लास्ट एडजस्टमेंट. यू हैव टू मेक अ प्रोविजन ऑन द BR ऑल्सो. लुक एट द BR ऑफ ₹4,000. सो पोस्ट हियर BR 4,000. अगेन दिस प्रोविजन इज ऑल्सो लॉस फॉर अस 200, माइनस किया 3,800. ये भी डेटर्स में से सॉरी इसमें से प्रॉफिट्स में से लेस होंगे ₹200. नाउ यू विल गेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट. तो सारी एडजस्टमेंट्स माइनस करने के बाद मेरे पास नेट प्रॉफिट बचा 42,790. दिस इज प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर. नाउ in your balance sheet you will write down the value of firstly all the rest of the assets. We have cash, bank, BR debtors और stock. BR debtors, furniture ये हम पहले ही कर चुके हैं, तो जो एसेट्स हमने पोस्ट नहीं की नई बैलेंस शीट में उसको पोस्ट कीजिए. कैश, बैंक 1,000, 2,000. जो लेफ्ट ओवर वैल्यू है स्टॉक हमने पोस्ट नहीं किया, सो यू हैव टू पोस्ट 32,000. And one more thing, plant and machinery also we have to post. The value of plant and machinery is 40,000. And in the liabilities we have the value of creditors. They are ₹18,000. Now you have to find out the closing capital. Now we have to use the formula here, opening capital. जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपनिंग कैपिटल में ऐड किया नेट प्रॉफिट और माइनस करते थे ड्राइंग्स. The closing capital is finding out by using this. Opening capital is 70, profit आया 42,790 after doing adjustments and drawings are of ₹12,000. You will get the correct value of closing capital after the adjustments. So once again, opening capital में हमने net profit ऐड किया, drawings less की, adjustments के बाद this is your correct closing capital. सो वी डोंट राइट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग कैपिटल जो बैलेंसिंग फिगर निकली थी, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट्स नहीं की हुई थी, इसलिए हम इसको सेम एज इट इज़ नहीं पोस्ट करेंगे. एडजस्टमेंट्स हमने एसेट्स लायबिलिटीज़ में की. अब जो क्लोजिंग कैपिटल है वो निकलेगी ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग्स. एट द एंड द टोटल मस्ट बी इक्वल. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. एज आई सेड, the conversion into double entry system is not the part of your syllabus now, so you have to sort out up to illustration number 12 as well as the exercise question. And from this side, yeah, so I can say from my side the practical section is complete now. We have to complete only 2 chapters. They are of theoretical nature.
the chapter number 3 principles and the chapter number 5 accounting standards. These two chapters are only left. As I said, you may cut the chapter rectification of errors, and these are the computer section chapters. They are not in our book. ये हमारी एक थर्ड मतलब एक ऑप्शन में बुक का पार्ट होता है जिसको हम लोग नहीं करते, तो हम कंप्यूटराइज सेक्शन हमारे मतलब अकाउंट्स में कभी भी नहीं किया जाता जो हम 11th में स्टडी करते हैं. सो वी हैव टू डू अप टू चैप्टर 23. ये जो कंप्यूटराइज सेक्शन है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ अनदर बुक जो कि हमारे बोर्ड्स में एक चॉइस में होती है, जो हमारे यू कैन से इस साइड के एरिया में हरियाणा में, या ये कह सकते हैं कि आपके हमारे इस साइड के एरिया में वो कंप्यूटराइज वाली बुक ऑथराइज नहीं है या एप्लीकेबल नहीं है. सो वी हैव टू डू द सेक्शन अप टू 23. इट्स नॉट ओनली दिस ईयर. कभी आप सोचे कि मैम ने ही बोला है इस ईयर ये कट हो चुका है, नहीं, ये हमारा कभी भी नहीं किया जाता. हम सिर्फ 23rd तक चैप्टर्स ही करते हैं. So only 2 theoretical chapters are left that I'll discuss in my next video. So up to that, try to sort out the question and take care of yourself. Thank you.